हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर कॉलेज ऑफ साइंस। तो स्टूडेंट्स आम डिस्कसन करूँ जेनेटिक्स। तो आज आम स्टार्ट करवा व्हाट इज पनेट स्क्वायर। सो लेट्स स्टार्ट विथ पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर माने कौन? पनेट स्क्वायर इज ए स्क्वायर डायग्राम that was introduced by R.C. Punnett in 1905. So you can note it is a square diagram introduced by Reginald C. Punnett in the year 1905. So now a Punnett square use कौन हो? So it is a square diagram, you all know. And to check the genotype of a cross, जिते दुटा पेरेंट्स भितर क्रॉस होउची आ प्रोजेनी गुडाक बाहरुचंती, ऑफस्प्रिंग्स बाहरुचंती, से ऑफस्प्रिंग्स रो जीनोटाइप कोन हबो ताकू चेक करिया पई जो स्क्वायर डायग्राम ता इंट्रोड्यूस हला बाय पनेट, दिस इज कॉल्ड एज पनेट स्क्वायर. सो टू चेक जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बा तुम या प्रोजेनी मध्य कही पारिबो ऑफ ए क्रॉस. फॉर एग्जांपल्स, हियर आई एम ड्राइंग ए पनेट स्क्वायर फॉर यू. सो दिस इज माय पनेट स्क्वायर. Okay, this is a Punnett square. So it is called about square, this Punnett square containing 4 boxes here in this diagram. So it is 4 ru dikhe bhi pare, but here I am drawing 4 square, 4 boxes. So how to calculate the genotype here? Suppose here I am doing a cross, good a cross monali, and this is the male parent. This is the female parent. So ये parent मन कर tall नहीं मु, and this is short but dwarf. So tall रो जीनोटाइप कौन हो पिले? होमोजाइगस डोमिनेंट नेली. एठी मु कौन नेबी? होमोजाइगस रिसेसिव. This is the cross. So एठी मु कौन करिबी? In this Punnett square, आउटसाइड द बॉक्स, बॉक्स बाहर कौन रहिबो? गैमेट्स रहिबो. बॉक्स भितरे कौन रहिबो? these 4 places, these 4 squares are the sites of fertilization. तो माने सेठी कौन होतो? गैमेट फ्यूजन हबो. गैमेट फ्यूजन हबो माने कौन? एलील कंबाइन हबो. कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स. आउटसाइड द बॉक्स द गैमेट्स आर प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल, ये क्रॉस टाइप आम पनेट स्क्वायर रे पकेवा. एठी मु नेली मेल पेरेंट्स, दिस इज द फीमेल पेरेंट. मेल पेरेंट कौन थिला? टॉल थिला. फीमेल पेरेंट कौन थिला? शॉर्ट थिला. ओके, सो दिस इज माय फीमेल पेरेंट एंड दिस इज द मेल पेरेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एठी कौन हबो? गैमेट बाहरिबो. रिमेंबर, alleles of the gametes are written within the circles. gametes रो जो allele टा सेटा सर्कल भितर रखियो. ओके, सो एठी कोन रहइबो? male gametes are there. This is the alleles of the male gametes. Okay, so ready will our Punnett square. Outside the square there are gametes. Inside the square कोन हबो? This is the site for fertilization. ठीक अछि. तो ये कौन करी? सपोज दिस वन, दिस allele will combine with this allele. So मेल गैमेट रो जो डोमिनेंट allele अछि सेटा का सहित कंबाइन करिवो? रिसेसिव alleles of the female gamete. So I can write the combination of allele. Okay, this is the genotype of one offsprings. So out offsprings रा कौन हबो? This dominant allele now combines with the recessive alleles. The second genotype is ready. Okay, third genotype, the dominant
alleles of the male gamete fuses with recessive alleles of the female gamete. So you will get the zygote, you will get the genotype, again capital T small t, third offsprings ର genotype कौन हबो, third progeny ର genotype कौन हबो, combining the alleles. Okay, so male gamete containing dominant allele, here the female egg also containing recessive alleles, so combine them. Combination हेले कौन मिलिबो genotype टा, again capital T and small t. So okay, so now these are the places where fertilization occurs. तो से जगह रे कौन हबो allele combination होउछ और genotype बाहरुछ. So इठी हमें लिखिछे कोन, this Punnett square is the square diagram to check the genotype of the offsprings or progeny of a crush. पाइगलो genotype. Okay, so genotype कौन हला, all four offsprings are heterozygotes. Okay, so इठी कौन आसिला genotypes, all offsprings heterozygotes. So इठू phenotype कौन हम तुम जानी पारुथिबो, as because capital T is the dominant factor and the dominant allele कौन करिवो, it will suppress the activity of recessive alleles. Dominant allele काम कौन, it will not allow the expression of recessive alleles. So phenotype will be tall. So all plants become tall plant. So phenotypes कौन हला, phenotypes tall है गला, बुझी बार जो समझते, phenotypes tall, all plants will be tall plants. This is clear to everybody? Okay. So the next concept is, what is a backcross? Okay, backcross माने कौन, cross means you all know, cross माने हम डिस्कस करूथुल लास्ट क्लास रे, ये दीटा प्लांट बा दीटा पेरेंट्स भितरे जदि ब्रीडिंग हुए, that breeding is called as cross. Backcross means what? इठी कौन हुए देखो, when plants are crossed, गुटे दीटा पेरेंट्स भितरे क्रॉस हैला. ओके, माने करो दुईटा पेरेंट्स भितरे हमें क्रॉस करूछु, तो तार जो ऑफस्प्रिंग्स बाहरुछ, से ऑफस्प्रिंग्स को जदि पुणी थरे क्रॉस करा जाए with any one of the parents, it may be male parents or it may be female parents, then that special cross is called as backcross. So note that point, backcross is nothing but what? The cross between the F1 progeny with any one of the parents. Cross of F1 offspring with any one parent, that is backcross. Example आमे गुटे नवा, this is the male parent and this is the female parent. We are making a cross in between them. This male is suppose capital T and capital T, and this is homozygous recessive female parent. So प्रथम कौन हुए, before fertilization, first of all production of gametes. Suppose this is my parental generation. Second step, gamete production. Gamete production is over. This is gamete, and you all know male parents male gamete production करूचंदी and male gametes are present inside the pollen grain. Now the female parent will produce female gamete which is present inside the female gametophytes. This is clear? So third step रे कौन हबो, fertilization. और तमे कौन पाइबो, F1 progeny. प्रथम पीढ़ी रो
जो ऑफस्प्रिंग्स पाइबो F1 जनरेशन प्रोजेनी रे कौन हम फर्टिलाइजेशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट यू कंबाइन द एलील गेट द जीनोटाइप्स एटा मने करो दिस फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करूछ तो कौन बाहरी वो जीनोटाइप्स कैपिटल टी स्मॉल टी और दिस क्रॉस है गला सो F1 ऑफस्प्रिंग्स रो फेनोटाइप कौन हम पिले F1 offsprings are having tall character. All F1 offsprings are tall. So, all F1 offsprings are tall. And this tall is homozygote or heterozygote? This is heterozygote tall. Okay. So, this is a cross. So back cross कौन ये आम गोटे जिन देखा कि द क्रॉस बिटवीन द F1 ऑफस्प्रिंग विथ एनी वन ऑफ द पेरेंट्स से F1 ऑफस्प्रिंगटा मेल पेरेंट्स सहित क्रॉस हो पारे बा दिस F1 ऑफस्प्रिंग क्रॉसेस विथ द फीमेल पेरेंट्स सेटा कौन है बैक हो गला ओके दिस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस so it note करो दीटा केस ही पारे फर्स्ट केस 1 the cross between F1 offspring with male parent this is your male parent और केस 2 रे हमें कौन नवा this is your F1 crosses with homozygous female parent this is the genotype of female parent he gala so idira kona this is the F1 this is also F1 clear to everyone so cross between F1 with male parent or the cross between the F1 with the female parent that is called as back cross okay सो एबे आमे देखिबा कि बैक क्रॉस टा कोन बाय करा जाय व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ बैक क्रॉस ओके बैक क्रॉस रे कोन होज द क्रॉस बिटवीन द F1 ऑफस्प्रिंग्स विथ इट्स एनी वन ऑफ द पेरेंट सो जदि क्रॉस पेरेंट सहित हुए ताले तार जो ऑफस्प्रिंग्स टा आसीबो सेठी कोन हबो द पेरेंटल कैरेक्टर्स विल बी रिस्टोर्ड ओके सो सिग्निफिकेंस ऑफ द बैक क्रॉस इज to restore parental character and these back cross are specially used in the horticulture plant agriculture plant farmings and gardens okay that is used in horticulture एग्रीकल्चर और गार्डेन्स फार्मर माने कौन करती मन कर से माने गोटे भल क्वालिटी भल ब्रीड किसी गोटे प्लांट्स पाइले मे बी फ्लावर्स क्रॉप्स और एनी काइंड्स ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल्स तो सी सेम क्वालिटी को मेंटेन करने ओवर द जेनरेशंस टू रिस्टोर द पेरेंटल कैरेक्टर्स ओवर द जेनरेशंस दे आर डूइंग बैक क्रॉस रे कौन होची आमे देखिलु बैक क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन द F1 प्रोजेनी विथ पेरेंट्स जदि पेरेंट क्रॉस इन्वॉल्व हैला तो तांकर जो जेनरेशंस आसीबो सेठी कोन हो पेरेंटल कैरेक्टर दैट इज रिस्टोर्ड पेरेंटल कैरेक्टर ता रही जिवो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग बैक क्रॉस सो द नेक्स्ट क्रॉस दैट इज टेस्ट क्रॉस Test cross means what and why we are doing test cross what is the significance of test cross so you can say it is a special type of back cross याको आमे back cross रे गोटे टाइप मध्ये कहि परिबा and in this special cross कोन हुए एठी the cross between the F1 hybrid with a homozygous recessive parent
So cross between F1 hybrid with homozygous recessive parent by cross between the F1 offspring with another plant which is homozygous recessive. F1 hybrid with another plant which is homozygous recessive for same trait. तमाने कौन से another plant टा कौन होइथो that must be genetically similar with the homozygous recessive parent. Okay, so you can say the test cross is a cross between the F1 hybrid with the homozygous recessive parent, or the cross between the F1 hybrid with a plant which is genetically similar to the parent, that is homozygous recessive. But why we are doing the test cross? I mean, कौन पाई test cross करिया? Test cross करिवार उद्देश्य होची to detect the genotype of the hybrids. Okay, purpose to detect genotype of hybrid plant. Okay, मन करो F1 hybrid रो genotype आमको जाना नहीं, but phenotype is dominant. Okay, conditions कौन होची F1 hybrid जो अच्छी मन करो this is the F1 hybrid, तार phenotype टा dominant अच्छी, बुझिया having the dominant phenotype. So problem टा सही थी है वो जते बड़ी phenotype टा dominant आसे, dominant phenotype दीटा केसेस रे एक्सप्रेस हुए, सेटा homozygous केसेस रे भी एक्सप्रेस हो बा heterozygote केसेस रे भी एक्सप्रेस हो. सो आमे केमती जानिबा our dominant phenotype plant is homozygote or heterozygote, ताकू डिटेक्ट करिया पय जो क्रॉस टा आमे करिबा, that particular cross is called as test cross. So let me explain you. Case 1, unknown plant, okay, और ताको F1 hybrid भी कही पारिबो तमे. phenotype टायर कौन अच्छी dominant अच्छी, phenotype is the dominant. Suppose it is tall, tall is the dominant phenotype, capital D. Okay, D is dominant. So it mu kemti janibi what is the genotype of this unknown plant, बुझियला. So first cases रे हम कौन करिबा गोटे cross नबा. So it is case 1, this is your unknown plant, और unknown plant को हमें कौन लिखिबा test plant. test plant को हमें क्रॉस करूचंती का सहित homozygous recessive हबो. So I don't know what is the genotype of this plant. So it कौन हुए formation of gametes, test plant भी gamete production करिवो, but I don't know what is the genotype of this gametes. So gametes भितर कौन allele अछि that I don't know, सेटा हमें कहीं जाने नहीं. Okay, so it मन करो after production of the gametes what will happen? Fertilization, fusion of gametes, then F1 offsprings will be there, productions of the next generation plants. So it कौन अब suppose case 1,
all plants, all progeny are having dominant phenotype. Dominant phenotype टा आम कौन नहीं टॉल नहीं सो क्रॉस होला पर जी प्लांट्स बाहर मनकर सबूतक प्लांट्स 100% प्लांट्स आर टॉल और हैविंग द डोमिनेंट फेनोटाइप्स. So that indicates this test plant must have homozygous dominant genotype. So यदि सबूतक प्लांट डोमिनेंट फेनोटाइप्स हुए टॉल हुए that indicates the genotype is homozygous dominant. बुझी हम कि नहीं केमती है यहाँ से दुटा जो कॉम्बिनेशंस रोची मनकर आ भितर कौटी भी गोटे रिसेसिव आलेल्स थी सपोज कौटा गोटे रिसेसिव आलेल्स थी ताहले ऑफस्प्रिंग्स रे कौन हम एटलिस्ट वन ऑफस्प्रिंग्स बिकम शॉर्ट बट ये कौन हो 100% प्रोजेनीज आर डोमिनेंट और टल दैट मीन्स ये दुटा जाक आलेल 100% dominant heithibo and the plant genotype is homozygous and dominant. Is it clear? Case 2. Case 2 रे कौन होची again the unknown plant or the test plant that is F1 hybrid and phenotype is tall. What will be the genotype? So this is the test plant. टेस्ट क्रॉस रे कौन हुए टेस्ट प्लांट इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रिसेसिव दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव अगेन गैमेट कौन बाहर आम जाणीनु बट आर गैमेट यू ऑल नो सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज द पेरेंट इज होमोजाइगस देन आफ्टर गैमेट प्रोडक्शन व्हाट विल हैपन दिस इज गैमेट प्रोडक्शन इज ओवर so it is जो offsprings above fusion of gamete will occur allelic combination will occur it is जो offsprings बाहर होची सेठी कौन बाहर होची हमें देखिबा what is the result of our cross you can check the result मने करो एटी बाहर होचंती 50% dominant that is your tall and 50% recessive that is the short बा ताकू ड्वार्फ बोली कहि परिबा ताले एटा कोन हेतिबो होमोजाइगस or हेटेरोजाइगस it must be heterozygous okay so conclusion the genotype of test plant that is your heterozygous बुझी हम सो नेक्स्ट आम देखा व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस ओके रेसिप्रोकल माने कौन रेसिप्रोकल मीन्स परस्पर परस्पर को हेल्प करिया मनकर दी जन फ्रेंड अच्छा सांग अच्छा सो गोटे सांग अन्य जन जो सांगटा थी ताकू नहीं गोटे दिन रेस्टोरेंट जाऊँगी तार पार्टी करने फेस्ट करने सो नेक्स्ट डे रे नेक्स्ट सांगटा जो सांगटा फास्ट फेस्ट रे खाई भोजी ओके सी पुणी तार आग सांग को लेकिन आ गोटे दिन रेस्टोरेंट रे खाया दूसरी से कौन है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रेसिप्रोकल हेल्पिंग ईच अदर सो रेसिप्रोकल क्रॉस माने कौन so it is actually a pair of cross it is not a single cross a reciprocal cross is a pair of cross okay so it is a pair of cross so it किमिति reciprocal होउची देखिबा मनकर क्रॉस 1 मुनेली फर्स्ट क्रॉस दिस इज क्रॉस A and this is my male parent it है कोन female parent cross between them male parent is tall homozygous this is short homozygous this is the parent then the next step gamete production this is gamete
then fertilization and you will get the F1 progeny. कौन बाहरी वो combine the allele and this is also having the same genotype. Fertilization माने कौन combination of allele and making the offsprings, designing the genotypes. है जीवो capital T small t heterozygote tall, capital T and recessive T, that is also heterozygote tall. What will be the character of the offsprings? Character कौन आसे बेटी all F1 tall. This is the first cross. Cross 2 रे आमे कौन करिवा सेक्स चेंज करिवा. फर्स्ट क्रॉस रे आमे नेइथिलु मेल पेरेंट एज टॉल, फीमेल पेरेंट एज शॉर्ट. क्रॉस 2 रे आमे तो रेसिप्रोकल करिवा. वी विल चेंज द सेक्स ऑफ द पेरेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट. सेठी आमे क्रॉस 2 रे कौन करिवा, दिस इज क्रॉस 2, क्रॉस बी पेरेंट. एठी आमे नबा कोन मेल पेरेंट एज रिसेसिव ट्रेट क्रॉस्ड विथ फीमेल पेरेंट एज डोमिनेंट ट्रेट. ठीक अछि. मेल टा को हम शॉर्ट नेलु, फीमेल टा को टॉल नेलु. एठी आमे कोन करतलु मेल इज टॉल, फीमेल इज शॉर्ट. सेकंड क्रॉस रे आमे सेक्स टा को अल्टर कर देलु, चेंज कर देलु. वी चेंज द सेक्स ऑफ द पेरेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट, दैट इज रेसिप्रोकल. बुझिले कि नहीं. सो ये कौन हम अगेन प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, गैमेट फीमेल पेरेंट भी गैमेट प्रोडक्शन हम फीमेल गैमेट्स. अगेन F1 प्रोजेनी कौन बाहर वो कॉम्बिनेशन ऑफ आलिल कैपिटल T स्मॉल t, आलिली कॉम्बिनेशन कैपिटल T एंड स्मॉल t. सो चेक व्हाट विल बी द फेनोटाइप. सो क्रॉस बी रे भी आम देखी पारुचे एठी भी जो F1 ऑफस्प्रिंग्स होउचंती कैरेक्टर रिमेन सेम. सो ऑल F1 आर टॉल. ओके. सो ऑल F1 आर हैविंग द डोमिनेंट कैरेक्टर. Character is not changed. So conclusion is what? After changing the sex of parents for a particular trait, the inheritance pattern of the character is not affected. जो character te transfer हो parents to offspring, that is not affected by changing the sex of parents. Okay. Conclusion: inheritance of character for a trait is not affected by changing the sex of parent so पेरेंट रो जदि सेक्स चेंज करा जाए फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट ताले जो कैरेक्टरटा इनहेरिट होउची बा ट्रांसमिट होउची टू द प्रोजेनी, इट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड. एंड दिस टेस्ट वाज परफॉर्म्ड बाय मेंडल. मेंडल concluded that reciprocal cross will not affect the inheritance pattern of a trait or character, but it is valid in the pea plant. Next time गोटे नबा by concurrence in the Mirabilis jalapa plant or the Pharuaclug plant, देखिबा सेठी कौन होउछ, whether changing the sex of parents will affect the trait or not. Okay. Suppose this is concurrence and the plant is Mirabilis jalapa. Common name there कौन अच्छी पिले Pharuaclug plant. Again we will do the reciprocal cross and it is a pair of cross. Cross A. First cross रे हमें कौन नेलू, this is your male parent, female parent, cross between them.
The male parent is having the yellow branch color. Female is having green branch color. ठीक ଅଛି. So after crossing in between them, this is parent and this is the F1. Roman language रे जदि note करिवो, this is the first generation and this is your second generation. No problem. So here all the F1 plants are having green branch. The result of the first cross, where female is having green branch, male is having yellow branch, the result is having the F1 offsprings, the F1 progenies are having green branch color. Reverse the sex. Okay. In cross 2, reciprocal cross concept kono, we will change the sex of parent. Cross B. Okay. So now this is my male parent and this is my female parent. I will change the sex. So एठी हमें कौन नबा कहलो, फर्स्ट क्रॉस रे हमें कौन देथिले, मेल इज येलो ब्रांच. सेकंड क्रॉस रे हमें चेंज करिवा, मेल इज ग्रीन ब्रांच. ग्रीन ब्रांच कलर. तो फीमेल को कौन नेबी, आई विल चेंज द सेक्स. दिस इज योर येलो ब्रांच. What will be the characters of the progeny? The result is shocking. Corinne was shocked. So the character of the F1 changes and it becomes what? Yellow branch. So Mendel जो reciprocal cross करते, that is in the pea plant, and he concluded that reciprocal cross will not affect the inheritance pattern of a character. But according to Correns same cross repeat kale out a plant, that is your Furrock plant. Furrock plant re kon ala, in the first cross you have seen green branch. Cross B, after changing the sex of parents, the result is also changed and the F1 becomes yellow branch color. So Correns becomes shocked and he concluded that why it happens. So okay, ये हम गोटे जिनस नोटिस करवा कौन एमती हो. In the Mendelian cross, character is not affected. Conclusion is that if the characters are controlled by nuclear gene, then it will not affect the character in the offsprings. Okay. Case 1. If the characters are controlled by nuclear gene. Nuclear gene means what? Nucleus containing the chromosome. Chromosome contains genes. So the gene that are present inside the nucleus is called as nuclear gene. If nuclear gene is responsible for the inheritance of a character, it will not affect the character in the offsprings. And the inheritance that are controlled by nuclear gene is called as karyoinheritance. So this type of inheritance टाक हमें कौन कहबा, if the characters are controlled by the nuclear gene, then this is called as karyoinheritance. This part is clear to everyone. Karyo means what? You all know. Karyology deals with study of nucleus. So karyoinheritance means the inheritance that are controlled by nuclear gene. Okay? Nuclear gene जदि character टाको carry करूथाय, character टाको inherit करूथाय, then it will not affect the change in inheritance pattern after changing the sex of parents. This is clear? So karyoinheritance will not affect the trait after changing sex of parent. Okay, but there is exception. Suppose disease यदि sex linked inheritance है, then there will be some different issue. But in general, nuclear gene will not
affect the inheritance pattern. So beyond nucleus how ko jagare gene thibo, except nucleus DNA is also present in the chloroplast or inside the mitochondria. That is why these two organelles, mitochondria and chloroplast, are called as your semi-autonomous organelles. Okay. So it we note kariba in the cross A and cross B why the characters are altered, because this is not a karyo inheritance, this is a organelle inheritance. Here the gene that controls the branch color is present inside the chloroplast, not inside the chromosomes, not inside the nucleus. So, eiti mone karo, this is your female gamete and this is the pollen tube containing the male gametes. Okay. So, you all have studied in the sexual reproduction in the flowering plants. This is what? Female gamete. And this pollen tube containing two male gametes. Okay. Pollen tube enters into the embryo sac through the micropylar end, and this is disintegrated. Two male gametes are released into the embryo sac. Okay. So, it is कौन होची देखिवा हमें. So, male रो जो pollen grain होची, its role is to contribute only the nucleus. Okay. Male gamete काम कौन? It is the nucleus donor. The cytoplasm and other organelles are donated by female gamete. Clear? So, it is कौन होची? Only the nucleus donated by the male gametes. The rest of the cytoplasm and organelles, that is contributed by which gamete? That is your female gamete. And remember, the female gamete here also donates the plastid. Okay. Plastid containing the gene that is responsible for the branch color, and this particular gene, suppose this is a plastid, this is a plastid here, and the gene present in the plastid is called as what? This gene is called as plastogene. Okay, this is called as plastogene, and the gene present in the plastid called as plastogene, that is responsible for the branch color. ताले ब्रांच कलर ऑफ स्प्रिंग्स रे कोन हबो जोटा फीमेल गैमेट रो जहा थिबो. ओके. फीमेल गैमेट ता फीमेल प्लांट बनै थिबो. फीमेल प्लांट रो जोटा कलर थिला ग्रीन ब्रांच, so offspring will become green branch because it is not contributed by the nuclear gene. बुझियबो. So female gamete containing plastid, plastid containing the gene that is responsible for the branch color, and the branch color becomes green. So एठी कौन होची? Here same cases. This is the female gamete, egg, female nucleus, pollen tube containing two male gametes, and these two male gametes are released here. यह भितर कौन थिबो? प्लास्टिड थिबो. प्लास्टिड containing the plastogene, and इठी जो प्लास्टोजेन टा अछि that is responsible for yellow color, yellow branch. बुझ पाले. तो फर्स्ट क्रॉसेस रे जो प्लास्टोजेन थिला that is responsible for green branch, hence the offsprings are green branch. एठी जो प्लास्टोजेन अछि सेकंड केसेस रे that is having the yellow branch. So characters कौन है in the F1 offsprings? All the plants will have the yellow branch. Okay. If the characters are controlled by the organelles, organelles are donated by the female parents. Okay. Organelles, cytoplasms are contributed by the female parents. So characters of the offsprings depends on the female parent, not on the male parents. So female parent रो जहाँ character थिबो offsprings रो से character रहिबो. सेथि पई this inheritance is also called as maternal inheritance. कौन कहबा को? Maternal inheritance.
ओके बुझीहब मैटरनाल इनहेरिटेंस माने कौन कैरेक्टर फ्रॉम द मदर फीमेल पेरेंटर जो कैरेक्टर थी ऑफस्प्रिंग्स सेम कैरेक्टर रहिबो दैट इनहेरिटेंस इज मैटरनाल इनहेरिटेंस सो आज ये थाउ थैंक यू ऑल ऑफ यू एंजॉय आवर वीडियो क्लासेस ओके थैंक यू।